Hey you guys, what is up and welcome back to Escape with PJ. If you're new to the channel, I'm Vibhuti. And I'm Jesu. And today we are in the capital city of Canada, Ottawa. So guys, हम आज Ottawa explore करने वाले हैं. We are on a road trip and right now we are standing in Parliament Hill, as you can see behind us. Exactly, which is super amazing, super huge. And this building is very old. It looks beautiful. So let's go and check it out. This is the Parliament Hill and the cool thing is कि यहाँ पे आप free guided tours ले सकते हो ये buildings में जाके. So there is West Block, there is a House of Commons, so there are like couple of things. So you can actually go inside and take a free guided tours. You can book them online, so I'll mention the link in the description. And there is one cool thing, let me show you. So if you'll see here, यहाँ पे ये fire है जो पानी में जल रही है. एंड ये हमेशा ऐसे ही जलती रहती है. वी आर एग्जैक्टली इन डाउनटाउन एंड ये सब कुछ यहीं पे ही है. इट्स जस्ट वन कॉमन ग्राउंड्स एंड यहाँ पे सारे की सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे पास ही हैं. सब कुछ नियर बाय है, विच इज़ रियली गुड. Parliament Hill is home to Canada's federal government, where representatives from across Canada gather to make laws that affect the lives of every Canadian. Walking here feels like you have taken a step back in time. The architecture here feels so historic, it's of Gothic style, and the Parliament Hill is located on a hill just above the Ottawa River. There is also sound and light show from July to September. Make sure you check for timings before visiting. We are in the Senate of Canada and we are waiting here for our tour to start. 1:30 पे tour start होगा और यहाँ पे कहीं पे photos allowed हैं, कहीं पे नहीं है. So we'll have to ask if we want to click pictures or videos. And there is a proper checking, तो आपका bag का checking and आपका पूरा checking होता है just like a airport security. Of course, this is a place जहाँ पे security checking होगी भी. So yeah, and it looks really nice. Senate of Canada was originally a train station. This is where all the action happens, where all the important decisions are made by senators. We were provided a free guided tour and the group had 15 to 20 people. You can select the timings on the website and the tour lasts for 30 minutes. As you can see, the architecture here is of 20th century and there are some elements of train stations still here, like the benches, the clock. Guys, we just saw the Senate of Canada and बहुत सारी knowledge मिली यहाँ पे क्या senator का role होता है, क्या चीज़ें होती हैं. The building itself was very nice. एक पुराना train station था जिसको उन्होंने Senate of Canada बनाया हुआ है. So you should at least try do one of the free guided tours here of one of the buildings. It's really worth it. Ottawa sign behind me, which you will find just outside the Parliament Hill. वहाँ से थोड़ा walk करके आओगे यहाँ पे आपको sign मिल जाएगा. It's really amazing. You can get some pictures and videos here. And there are also some seatings here and some restaurants and boutiques here. यहाँ पे आप shopping कर सकते हो. You can enjoy some food and drinks here. So this is really good. I heard that Ottawa is kind of a boring city, but so far I really like it. It looks really fun and there are so many interesting things to do. Let's pretend
pretend this isn't my life. Let's pretend it was a great night. Let's pretend that it was real nice. Let's pretend that it's a movie. Let's pretend that it's a story. Let's pretend that it was. So right now we are headed to Royal Mint of Canada, जहाँ पे coins और medals और ये सारी चीज़ें बनती हैं, and we are using our canoe membership. If you don't know about canoe, if you are a PR or a Canadian citizen, you can use canoe to enter for free at such touristy places. But also if you are in Ottawa and just planning on visiting Royal Mint, then you can. The tickets are only $12 for adults and $10 for senior citizens. So I will be using canoe for 2 tickets and then I'll be buying 2. But overall, if I just talk about the city of Ottawa, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत साइलेंट सी सिटी है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, आई थिंक 10 लाख की कुछ पॉपुलेशन है, तो इट्स रियली नाइस, पीपल आर नाइस, इट्स नॉट क्राउडेड लाइक टोरंटो. Guys, we just got done with Royal Mint of Canada and ये 45 minutes का इंटरेक्टिव टूर था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था. वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी बिकॉज उनकी जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है वो लीक आउट ना हो जाए. हमने देखा वहाँ पे कॉइन्स कैसे बनते हैं, कैसे प्रिंट होते हैं, कैसे क्लीनिंग होती है. सो इट इज़ रियली गुड, वर्थ इट. तो आई लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स, जैसे कि एक दिन में रॉयल मिंट में 200,000 कॉइन्स बनाए जाते हैं. उनकी मशीन से भी बनते हैं, हाथ से भी वो लोग बनाते हैं, एंड दे सेव अराउंड $87,000 अ वीक with their new technology. So those are like some interesting facts that I learned and saw the complete process कि gold, silver कैसे आता है, कैसे वो melt करते हैं. तो like it is a very interesting process. So from coins they also make medals, Olympic medals. So there are like lot of things that they make. यहाँ पे ये लोग notes जो bills होते हैं वो नहीं बनाते हैं, वो बैंक ऑफ कनाडा में बनते हैं. So only coins here. So yeah, so you should definitely check that out. This behind me is National Gallery of Canada. It's a museum here in Ottawa, and just look at the giant spider. It looks really spooky, and this is the highlight of this building. इतनी सुंदर बिल्डिंग है. इस म्यूजियम के बाहर a giant spooky spider. Looks quite huge. बहुत आई थिंक इसमें 2-3 घंटे तो लगेंगे आपको इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने में. ऑल्सो दिस इज़ ऑन कनू एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस फॉर फ्री इफ़ यू आर अ PR और Canadian citizen here. So yeah, utilize your canoe. This behind me is Notre Dame Basilica and this is free to explore. तो चलो यहाँ चल के देखते हैं अंदर से ये कैसी है. Let's go. Just saw Notre Dame Basilica. It is so beautiful. जैसे मॉन्ट्रियल की चर्च अगर आप वहाँ पे गए हो तो वैसी ही है, बहुत ही pretty है, and it's free and it's open from 9 to 5 PM. So you can come and check this place out. So I was just discussing with Jesu here कि मॉन्ट्रियल में जब हम गए थे वहाँ पे there was like some ticket price $21 or something and it was so crowded. And यहाँ पे it is like there are not much people in there. तो you know मतलब free है but फिर भी ज़्यादा लोग हैं नहीं. So it makes you realize that free की चीज़ों की value नहीं होती है. Exactly. And it is paid and it's all same but वहाँ पे it's so much crowded there. तो चलते थक जाओ
तो ये भी रेंट आउट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। या एग्जैक्टली सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे। कहीं भी घूम रहे हो, जब भी थक जाओ, हर जगह आपको स्कूटर मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद गुड टू गो। Right now we are at Ridgew Canal. This is one of the National Historic Site. Let's go and check it out. This is Ridgew Canal and that bridge, ये bridge के उस side है Quebec. So right now we are standing in Ontario. एंड ये ब्रिज क्रॉस करते आप पहुंच जाओगे दूसरे प्रोविंस में विच इज़ क्यूबेक प्रोविंस। ऑटवा घूमने के बाद हम गए डिनर करने और डिनर हमने किया बहुत अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट में। यहाँ का ये मेन्यू है, यू कैन पॉज टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लुक एट द प्राइसेस। द फूड वाज रियली यम। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड में। अब आपसे मिलते हैं क्यूबेक सिटी में। प्लीज़ कंसिडर सपोर्टिंग आवर चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।